Good morning all. Welcome you all in the lecture series of data science. So in previous lecture, we are briefly discuss about the life cycle of data analysis. Okay, means what are the steps which we can follow for the analysis of our data. Okay, so these are the steps or the phases which we can use during the data analysis. Okay, so this is the discovery phase, then data prediction, data modeling, model building, communicate the result, and after that the last phase is operationalize. Okay, you just deploy your model and use it. Okay, this is the graphical representation of your all the phases, how all the phases is interconnected with each other, and how they are responsible to each other. Okay, so in all the phases we are updates as per our need and as per our requirement. Okay, तो जैसे यहाँ पर डिस्कवरी फेज में है, डिस्कवरी फेज में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने क्या किया, डेटा प्रोसेसिंग फेज को हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया. अब एज पर अवर डिस्कवरी फेज डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. डेटा प्रिपरेशन फेज में अगर हमें कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, सो दे विल अगेन कम्युनिकेट विथ डिस्कवरी फेज. ओके, दे विल अगेन कम्युनिकेट विथ डिस्कवरी फेज. Okay, so this is overall structure and life cycle, how the life cycle is work exactly. Okay, so in all the phases they can modified their data as per their requirement. Okay, so this is the graphical representation of your life cycle, and then the first phase. Okay, so you just see what is the seriousness of your first phase. So first phase, the team learn the business domain. Okay, first टीम को क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते थे कि सबसे पहले आप क्या करते थे, एक एसआरएस मॉडल बिल्ड करते थे. एसआरएस बिल्ड करते थे. एसआरएस में क्या होता था, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते थे कि क्या एक्चुअल में कस्टमर की नीड है, कस्टमर की डिमांड है. सिमिलरली यहाँ पर भी हम डिस्कवरी फेज में क्या करेंगे कि हम डिस्कवर करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को एंड एक्चुअली कस्टमर डिमांड को, कस्टमर नीड्स को. सो द टीम लर्न द बिजनेस डोमेन. सबसे पहले टीम बिजनेस डोमेन को आइडेंटिफाइड करेगी, उसको लर्न करेगी, एंड इस फेज में टीम मस्ट लर्न एंड इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम. टीम इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम and develop the context and understanding, learn about the data source needed and availability for the projects. Okay, अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम अपने डेटा सोर्सेस को देखेंगे कि क्या हमारे डेटा सोर्सेस हैं. So two things is here. First, understand the problem, and after that you just see or the learn about the data source. And third point is the team access the resource available to support the project. Which type of resources we can focus for collection the data and the information. ठीक है, तो हम उन सोर्सेस को आइडेंटिफाइड करेंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द
important activity in this phase include the framing of the business. Okay, जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, उसको हमें क्या करना होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना होगा, उसकी एक फ्रेमिंग करनी होगी. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस द चैलेंजेस. Okay, what are the challenges which the team will face. ठीक है, तो चैलेंजेस को हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाइड करना होगा. और जो भी प्रीवियस हमारे पास मॉडल थे, प्रीवियस हमने वर्क किया था, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एंड उसका फॉर्मुलेशन करना है. ठीक है. सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ योर first phase. Okay, so here is the key point or the key function of this discovery phase. First one is learning the business domain. First, learning the business domain. Second, identified the resources, and after that, formulation of the problem or framing of your problem, and then identifying the की स्टैक होल्डर्स, किसके लिए हम वर्क कर रहे हैं और कौन इसका यूज करने वाला है, उस पे फोकस करना है. ओके. एंड द फिफ्थ की पॉइंट इज डेवलपिंग द इनिशियल हाइपोथेसिस, एंड दिस सिक्स पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल डेटा सोर्सेस. ओके, सो दिस इज द की फंक्शन ऑफ योर डिस्कवरी फेज. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने बिजनेस डोमेन को समझना होगा. बिजनेस डोमेन के बाद हमें रिसोर्सेस आइडेंटिफाइड करने होंगे कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, रिलेटेड डेटा हमें कहाँ से मिलेगा. उसके बाद हम अपने पूरी प्रॉब्लम को क्या करना होगा, हमें पूरे प्रॉब्लम को फ्रेम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड देन आइडेंटिफाइड द की स्टैक होल्डर्स, किसके लिए हम अपना मॉडल बिल्ड करने जा रहे हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा. देन हाइपोथेसिस, प्रीवियस प्रॉब्लम के बेसिस पे हमें क्या करना होगा, एक बेंचमार्क सेट करना होगा और उसके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है ना. जो भी हम अभी मॉडल डेवलप करने जा रहे हैं और जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है, जो भी वर्किंग मॉडल है, उसके बेसिस पर हमें इसको क्या करना होगा, टेस्ट कर सकते हैं. देन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल डेटा सोर्सेस. ठीक है. इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हमें समझना होगा, सोचना होगा और देखना होगा, आइडेंटिफाइड करना होगा. ओके. सो जो भी फर्स्ट की पॉइंट था रिसोर्सेस. ठीक है. तो रिसोर्सेस में हमें क्या क्या देखना होगा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. द टीम नीड टू एक्सेस द रिसोर्स अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स. ओके. टीम को क्या चाहिए, रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी चाहिए. And in this context, the resource include technology, tool, system, data, and people. ठीक है ना. हमें कहाँ से ये मिलना है, टूल्स क्या है, किस टाइप की टीम की हमें जरूरत होगी. So we'll bother about this. And also find the available tools and technologies. ठीक है. हमें किस टाइप के डेटा सोर्स के साथ में हमें डील करना है, उससे डील करने के लिए हमें किस टाइप के टूल्स की और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम इस फेज में करेंगे. एंड व्हाट टाइप ऑफ स्किल एंड रोल विल नीडेड फॉर द रिसिपेंट्स ऑफ द मॉडल बीइंग डिप्लॉयड. ठीक है. किस टाइप की एक्सेस स्किल चाहिए, स्किल सेट किस टाइप का चाहिए मॉडल डिप्लॉय करने के लिए, मॉडल को बिल्ड करने के लिए. सो दिस रिसोर्स में हम ये सारी चीजें भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे. इवेलुएट हाउ मच टाइम इज नीडेड एंड इफ द टीम हैज द राइट ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ द स्किल.
ठीक है। हम इस मॉडल को जो डिप्लॉय करने वाले हैं उसमें हमारा एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा, कितने समय में हम इस मॉडल को डिप्लॉय कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। द टीम नीड टू एग्जीक्यूट, extract, load and transform. This is the tool for extracting or getting the data. Okay, so the team need to extract, load and transform, or extract, transform and load to get data into the sandboxes. ठीक है, this is the tool, and data should be transformed in the ETLT process. डेटा को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट बाय यूजिंग ELT or the ETLT process. ठीक है, सो दिस इज फॉर द रिसोर्स। ठीक है ना। सो रिसोर्स में हमें वो सारे बेसिक्स इंफॉर्मेशन गैदर करने होंगे, या बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें सोचना होगा जो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर फेज फर्स्ट, डिस्कवरी फेज।